start? Hi, today we have very renowned sexologist and we have the honor of having a conversation with Dr. Deepak Jumani from Mumbai. Dr. Jumani, I think, has a wide experience of around more than 45 years in sexual medicine. He's been treating patients across the world. And thank you so much, sir, for your time here. Thank you. Sir, very two important questions. One, lot of people understand that sexual health is important, but a lot of people still ignore it, feeling that it cannot be treated. So what message would you want to give to people of India first, that is sexual dysfunction treatable? Are they normal? Are they treatable? Well, one thing which is very important for all of us to know is that the medical science is advanced so much that whatever is less in our body, say if your hemoglobin is less, calcium is less, vitamin is less, or anything B12 is less, hormones are less, we can increase it. Yes. And whatever is more in our body, say your sugars are more, your lipids are more, your pressures are more, we can bring it down. Bilkul. And sexual dysfunctions are all about something going low or something going high. So if anybody has any issues in the bedroom and if he consults a doctor, he can easily manage any sexual dysfunctions today. Wow. Because sex is the most important part of the quality of life which we are living. It's the best glue in any relationships. Ji. If you are not comfortable with your sex or if you are having some issues, it will affect your self-esteem, it will affect your relations, there will be a dent in your relationship also. It will affect your partner also. So it's always better to talk it out, go to your family doctor, just ask him. Because you can ask you go to your doctor for every reason. You go for cold, cough, piles, cancer, heart disease, diarrhea, dysentery. But why can't you go for this thing? It's okay. We are all humans, so we all can get problems anytime. Yeah. So and we are stressed so much. We have got so much of stress today. From morning to evening, you at least have lots of bouts of stresses. The traffic, the work, the relationship, the family, the workplace, the colleagues. So you have stress. And stress is one of the important aspects where you are getting sexual issues because of stress also. Very true. So it's better to talk it out and finish off the matter. Very true. Sir, another thing which a lot of questions come up, that we want quick solution. मुझे erectile dysfunction है, मुझे जल्दी से ठीक कर दो. मैं 1 महीना या 2 महीना वेट नहीं कर सकता. तो उसका क्या सॉल्यूशन है? कैसे? अगर कोई कहता है कि मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो उसको अगर कल से हुआ है या 1-2 दिन से हुआ है, तो दैट इज नॉट ऑर्गेनिक इरेक्टाइल, इट विल बी साइकोजेनिक और सिचुएशनल हुआ. वेरी ट्रू. अगर उसको काफ़ी टाइम से है या उसको और कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, लिपिड्स बढ़ गई हो, विटामिन डी लो हो, यूरिक एसिड बढ़ गया हो, या वो स्मोकर हो या अल्कोहलिक हो, इन सब कारणों के अगर होता है उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो उसको काफ़ी टाइम से होगा. yes. तो वो इतना टाइम क्यों वेट कर रहा है? राइट. अगर उसको 1 दिन पहले हुआ है तो इट इज़ प्योरली साइकोजेनिक. बिल्कुल. तो हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन उनको कहते हैं कि जिनको इरेक्शंस सस्टेन नहीं होते और वो 6 महीने तक उनको होना चाहिए. द ड्यूरेशन हैज़ टू बी 6 मंथ्स और उनके आपस के रिलेशंस में भी डिस्ट्रेस होना चाहिए. Then only we call this patient having erectile dysfunction. हम ऐसे किसी को ED है ऐसा नहीं बता. 1 बार 2 बार हुआ तो किसी को गम हो जाता है, कोई फेल हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, झगड़ा हो जाता है घर में, तो भी कभी कभी ये होता है. तो दैट डज नॉट मीन ही इज गॉट ऑर्गन, ही इज गॉट साइकोजेनिक ED. उसको थोड़ा काउंसलिंग करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा. Sir, coming to this part only, how important is counseling, and is it something like कि पेट दर्द हुआ, दवाई ले ली, ठीक हो गया? How important role does counseling play in treating erectile dysfunction, premature ejaculation? Because people refrain from taking counseling कि हमें सिर्फ दवाई दे दो, हम ठीक हो जाएंगे. Is that right? वो कई बार हमने ऐसे पेशेंट्स देखे जो केमिस्ट के पास जाके दवाई ले लेते हैं और हमारे पास आते हैं, डॉक्टर मैंने ये लिया, कुछ हुआ नहीं. सो द पॉइंट इज काउंसलिंग इज द कॉर्नरस्टोन, द बेंचमार्क, द बैकबोन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ एनी सेक्सुअल डिसफंक्शन. काउंसलिंग है क्या? हम पेशेंट्स को सुनते हैं और उसको एडुकेट करते हैं उसके बारे में. करेक्ट.
अभी आप सोचो एक छोटा बच्चा है 3-4 महीने का यहाँ बैठा है, जी ओके, उसके पास में एक सांप जाता है तो वो उसको पकड़ेगा, उसको ये मालूम नहीं है कि मैं उसको पकड़ रहा हूँ, मुझे काटेगा, मेरे को जहर अंदर जाएगा, मैं कुछ हो जाएगा मुझे। आप करोगे क्या ऐसा? नहीं। क्योंकि यू हैव गॉट एजुकेशन। यस। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और काउंसलिंग में हम पेशेंट्स को सुनते हैं, बिल्कुल। हम जज नहीं करते उनको। कि Counseling स्किल्स हम हमें यूज़ करके हम उनको सब समझाते हैं कि भाई आपको ये है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे पेशेंट्स को होता ही है और ये बहुत कॉमन है और इसका इलाज भी है। एंड वी एक्सप्लेन टू देम व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, हाउ दिस कैन बी रिजॉल्व एंड हाउ दिस विल नॉट रिकर अगेन। वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। ये 3 चीज़ों के पर हमारा सारा काउंसलिंग बेस होता है। पहले तो उसको सुन लेना है सब कुछ, क्या भी जो बोलते हैं, अगर हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसका ये बात है वो किसी को बताता नहीं है, अपने घर में नहीं बताएगा, दोस्तों को नहीं बताएगा, माँ बाप को नहीं बताएगा, तो वो किसको तो बताएगा, तो उसका भी हल्का होगा मन। और उसने एक जेन्यून डॉक्टर के पास आके बोला है तो उसको रास्ता तो मिलेगा। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सो ही इज़ कम, वी लिसन टू हिम, वी emphatically listen to him. We feel in our shoes that this is his problem, is my problem. Yes. And then we talk to him nicely. We explain to him what is the problem, why did he get the problem, Right. and why will he not get the problem in future. ये बताना बहुत ज़रूरी है because it's not one time, ये कभी भी वापस भी हो सकता है. So he knows, he will realize. हमारे पेशेंट्स की काउंसलिंग कम से कम 2 घंटा चलती है. Right. So we explain to them everything, and he's so enlightened and he feels so light after that कि मुझे solution मिल गया. और हमेशा मेरे पेशेंट्स से मुझे ऐसे बोलते, डॉक्टर साहब आई शुड हैव कम टू यू 1 year before, 2 years before. मैं खाली पीली सफ़र कर रहा था, मैं इधर उधर गया, आई शुड हैव कम टू यू. सो ये फीडबैक आता है और ये बहुत ही ज़रूरी है. एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड देन ही इज़ आउट ऑफ इट. So generally, last question, I know you have a flight. Last question. How much time does generally a problem like who has erectile dysfunction or a premature ejaculation or a low sex drive, how much time, how many months does it need for them to be patient that okay, I'm getting treated? देखिए, जो भी कारण है जिसके कारण उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जैसे समझो डायबिटीज़ है, तो आई हैव टू ब्रिंग इज शुगर्स अंडर कंट्रोल. ओके, उसको डायबिटीज़ काफ़ी टाइम से है, तो उतने टाइम से उन जो भी इरेक्टाइल टिश्यू है उसमें डैमेज हुआ होगा. अब उसका कंट्रोल में आया, तो कंट्रोल में आने के बाद भी कुछ टाइम तक वो जब भी नॉर्मल रहा, तो देन द फंक्शंस विल बी नॉर्मल. Then we'll give him a little push of some medications and he becomes all right. Normally, if it's a long-standing diabetes, hypertension, it takes about 4 to 6 weeks. If it is fresh or if it is not any organic disease, it is less than a week. Oh wow, great, great. Thank you so much, sir. It was such an enlightening knowledge. Thank you so much for your time, and the talk was amazing.